Students, in today's session, at the outset, I arranged a quiz for you that hopefully it should be available now to you. You have to solve it, and the duration of this quiz is 15 minutes. 10 questions, it includes 10 questions, and all questions are MCQs. So you have to solve it after, when you submit it, after 15 minutes, then we will start our session. This session is related to your topic, that is relational algebra. So I have already sent you the notes that is related to that topic. I also shared with you the video, the recorded lecture, and also shared with you the slides. So hoping you have gone through those, and I will help you to address your questions and queries if any. So please solve this quiz, and then it should be up to 2:22. You may work on that quiz for 15 minutes. Please go on. If you students join the session, it's not the encouraging sign. If you face any difficulty,
uh, to understand the questions. So you may ask from me. I can help you.
Please try to submit within time. You have 3 minutes more to submit your quiz. Have all of you submitted the quiz? Hello? Yes, sir. Hello? Did all of you submit the quiz? So we have to start the session at 2:22. सर वो रिस्पॉन्स चेक कर लेना किस किस के आ गए हैं, आपको पता लग जाएगा. Okay, that's good that we have to start our session at 2:22, and we have to discuss our topic, that is relational algebra. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Screen is visible to you? Hello? Slides are visible? Hello? Hello, Azim? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, visible. So let we start our session regarding, we have to discuss the topic relational algebra. In our previous lectures, we completed data normalization, and we have studied the normal form, advanced normalization. So within designing of a database system, we have studied data modeling. We extensively studied your relational model. We also studied your normalization. So for the relational model to be implemented, you need database management systems. They are implemented with the help of that. Now what we have designed, we have to go for its implementation. And in coming lecture, we will also learn structured query language. So in today's session, we have to say the structured query language basically based on relational algebra and relational calculus. Both are theoretical aspects, and we have to study that because we likely to use SQL, and we have to say how the SQL is based on relational algebra and relational calculus. So how it is important, and then we have to say how we have to do some queries
whenever we have to prepare our tables, that were relations, and in order to manipulate our data or retrieve our data, or in another word, sometimes we have to update our tables, that relations, and how such query languages helps us. Furthermore, we have to discuss the basic operators, and those are available in relational algebra. Those are used for manipulating our data. So the operators, those are the basic operators with the relational algebra, and derived operators that I have to explain those. I will explain each and every slide again, and you may raise questions if you are unable to understand what I am talking about. So regarding the query language, we say that the query language is not programming languages. It has its own limitations, and the query languages are basically your non-procedural. So it might help to access the data. You can easily access the data and do manipulation, but when we have to do very complex calculations or engineering calculations, these languages are not helpful. So for a structured query language, it is based on two languages. One is called relational algebra and other is called relational calculus. And both are the theoretical concepts. And sometimes when we likely to give its syntax and so, it does not look to be user friendly. So just we have to say the relational algebra, basically this is a set of operators, and those operators are used in order to manipulate our operands. In our case in relational algebra, the operands are relations, are tables, and operators that we have to look for, what operators are given by this relational algebra, that we have to discuss one by one. Just you have to say, if you have a mathematical formula in which you say a plus b equals c, and you can see, you may get c with the help of adding two variables a and b, let's suppose. So the plus is operator within that. A and b are operands. Okay, so similarly, when we have to do relational algebra, our operands are our relations. Those are tables basically, and the operators that we have to discuss, like select operator, project operator, division operator, and so and so. I will study. I will let you know one by one. So we can say the relational algebra is a theoretical language, and how the operators are operated there, they are operated on the relations, and relations are called operands. And what is the result of that when we say one relation plus second relation, so and so? And if we say with the relations, we have to use some sort of operators to have some sort of end results. And those operators might be unary operators, those might be binary operators. Unary operators mean that those operators needs only one relation to be processed. For the binary operators, you say at least there should be two relations. So just you have to keep in mind, when we use these operators, our end results is also a relation. Mean, if we have to operate a relation, a single relation, and the operator is helpful to manipulate that, at the end we get the result that is also a relation. Okay, this you have to keep in your mind. So relational algebra, it helps you for the data retrieval, and the number of operators that we use, those are very much related to the relational algebra, are different. Some of the basic operators and some are the derived operators. It uses instances of relations as input and gives output. For example, if we say we have a relation A, relation B, and within the relation we have tuples, rows, and those may take as input and also give the output.
The input is also in terms of relation instances, and the output is also in terms of a relation. This is you have to remember. So the relational calculus, whereas the relational algebra is called procedural language, whereas relational calculus is called non-procedural language. The basic difference between the two terminologies, for a language, if it is procedural or not, just you have to think that if I give a task to the computer, and each and every step I have to let the computer know how these steps one by one should be carried out in order to accomplish our results, in order to get our desired results. Then you say this language is procedural. On the other hand, if you give the task to the computer and the software will assist you, or language will assist you to just say, do this task for me. You are not giving the details of each and every step. Then you say this is non-procedural. For example, you can say your friend that, would you please prepare some tea for me? And you are not giving any clue to that friend that how the tea should be prepared. So you can say that this way to ask your friend to do that is non-procedural. Whereas the procedural, that you have to give them instructions, just take such things, and then you have a burner, you have a water, and so, and stepwise how it should be prepared. You give each step and tell each step to your friend. Then you say that is the procedural way. So this is the basic difference between non-procedural and procedural languages. So relational calculus, basically it has two forms. One is tuple relational calculus and other is called domain relational calculus. Did you study this material at your home? Hello? Hello? Any student? Have you studied this material at your home? Huh? Hello? You're not replying. No, sir. Azim? Shoaib? Yes, sir. No, sir. Did you study this material at your home? Yes, sir. If you have any difficulties regarding any slide, then you have to let me know, then I will discuss your problem. So for the No, tuple sir. calculus, we say the tuple relation, we work on filtering tuples based on the given condition. For example, you have a relation or a table. Surely you have a structure for that. That is the schema for that. It might have 2, 3, 4 attributes. Let a relation is student, and we have is schema large student ID, student name, his date of birth, let's suppose, and his course registered. So we say we have near about 20 records with us, 20 tuples with us. We likely to filter the records that I need only those records in which the name of the student is Aslam. So what you are doing, you are filtering, and your result will be only those tuples, those will meet the condition. So such aspects are dealt with the relational calculus. So we have the syntax, the selecting tuples that satisfy the given condition. We have given the condition for those instances and whether T as resulting tuples. Okay, it will give you a table which have the only rows, those will meet the condition. So when the aspects of relational calculus, those are dealing with the tuples, you say this is tuple calculus. Furthermore, we have to say we may deal with your columns also.
So that is called domain relational calculus. Filtering is done based on the domain of the attributes. And domain of the attributes, what we mean? Every attribute has its own value space. And for example, if I say one of the attribute is name and other attribute is student ID, so both have different domains. The student ID, that is the roll number or number, they are from different domain, whereas the name is from different domain. So when we deal with that columns, then we say this is the domain relational calculus. So its syntax is that you have C1, C2, C3, Cn, these are the columns, and then you likely to access the columns of your own need, and you have to give some sort of condition, so we can retrieve that. So that aspect is related to the domain relational calculus. In the next, we will discuss some examples. It will be more clear to you. So the language for describing queries on relational database are called structured query languages. So whenever you likely to retrieve data from any relation, you have to build a query, and those maybe you are extracting or retrieving the records according to some condition. So we have to learn about the SQL in coming sessions. So some of the persons are working on database management systems, that are basically Oracle. Some are working on SQL. Some are working on MySQL and so and so. So the structured query languages are declarative. It means this is not procedural. This is non-procedural declarative. But within the relational algebra, we say the relational algebra is procedural and relational calculus is non-procedural. These are the theoretical languages basically. So query is applied to the relational instances, and the result of the query is also the relational instances. What does it mean? Because whenever we have to build a query in order to retrieve our data, so that condition is applied on the instances. Instances mean the rows, the tuples. We have to apply on that. And as a result, we have also to filter the tuples and get the tuples. In both way, what you are giving input to the operators that we likely to study with the relational algebra. Those are basically relation, and the output will also be a relation. Furthermore, he is saying that the schemas of input relation for the query are fixed, and schemas for the result of the given query is also fixed. You see, whenever you have to make any query and you have to manipulate the data within any relation, you know its schemas, and that is fixed for that table. And whenever to get any result, that is also in form of table, and its schema is also fixed. Schema means the structure of the table. So if one person asks you what does mean the relational algebra, you just say this is the language which is based on the operators and domain of the values. Okay, and the operators are used, and the operands in our case are basically your relations, and the output is also a relation. Saying an expression involving operators and arguments produces a value in the domain. So if I have to summarize that, just I only say the relational algebra is theoretical languages. Okay, its operators may be applied on a single relation. It might be applied on a two relations, and the operators, those are operated getting a single relation. We say unary operators that will consider two operands to be operated. Then we say this is the binary operators. But the main thing is the input is as relations and the output also as a relation. So this is from the Beck. This is the one of the quoting. It says the relational algebra is a relation at the time language in which all tuples possible from several relations are manipulated in one statement without looping.
So it is saying when you have to manipulate the data, that may be from a single relation, that may be from different relations, those we have coined in the very beginning. So those several relations, but we need not to do some sort of looping for that. Sometimes when you have to retrieve the record, let's suppose from the file, you surely need some sort of loop statements. But within that, you need not to have the looping. It will help you, the non-procedural language, to deal with all things. Just again, it is the same thing when a domain of is a set of all relations, and we get relational algebra. We say there is operators, and we have a set of relations that we have to manipulate. So in order to retrieve the data, we have to build some sort of the queries. And the query result, that is when we run that query, the result also a relation. This is the main point within that. So for relational algebra, the domain is a set of relation, and the basic operators that we likely to study: select operator, project, union, set difference, Cartesian product. These are called the basic operators. And today we will cover select, project, and union operators. And rest of them we will cover in the next coming lecture. So one of the operators, those are derived operators. These are set, instruction, division, and join. So the relational algebra is procedural. So we have to specify the query and describing with the help of the algorithm, and the sequence in which these all operators should be operated and applied in order to get our final results. So for that, the every operator takes one or two relation instances. I have already told you. So relational algebra expression is recursively defined to be a relation. This statement reflects that whenever you have to do any manipulation with the relation, and then your ending result that you will get from this operation, and that should be also a relation. Just take it that you are familiar with that. These are the three tables. We can say these are relations, and you can give any name to that. Let's suppose the first table is student table. It has student ID, name, age, and departments as attributes. So you can say student ID, name, age, department. It reflected schema or the structure. Similarly, you have course ID, name, and department. These are the just examples of the tables or relations. So the operators that we have to study today, we have to study selection, we have to study projection, and might be I will cover one or two more if I would be able to have a time. So for the selection operation, you say it is denoted by sigma, and or filter rows from a relation, and those filtering should be done with the help of a predicate that we say what is the condition. According to that condition, we have to get the rows from the number of rows those are available within that relation. In projection, we have to deal with the columns. Just we say display the required columns. The unwanted columns, we need not to display that in our result. So the last one is cross product. That is denoted by X. Projection is denoted by pi symbol.
Might be you would be familiar with the cross product when you studied set theory in your math exam or in your FSC. Did you study that? Hello? Any? Yes, sir, we have studied. Okay, that's good. When you have a cross product A and B of the sets, this is Cartesian product, and that is also one of the operation in our relation algebra. Then we have set difference. If we have two set and say set A and set B, I say why not? I have to calculate A minus B. So what does it give us? Tuples in relation A but not in B. So A minus B. So in a relation, if we have 10 tuples and the other relation we have 2 tuples only, let's suppose. So set difference tuples in relation A, and those must not be available in the relation 2. So we can say this A minus B. So if you concentrate on this definition, you can infer that A minus B never be equal to B minus A. So I will give you also example to demonstrate that. So the union operator we will study in the next coming lecture. This is a rename operator. That's also a unary operator because it is used if you would like to change the name of the attribute in the relation. And it is denoted by row. Here is written the row X by Y. Relation is R. What you are saying that we will rename the attribute Y of the relation by X. So in order to change the name of the attribute, we say this operator is helpful. So other extended derived operations are intersection, join, and division. I hope that you would be familiar with the intersection and union, huh? Because with the set theory, Yes, sir. Yes, sir. union, with the union you have all members, those are available in set A and set B. Whereas in intersection, you say I have to get only those members. Those are common within the A and B in two sets. Yeah, this is intersection. So we have to study these operators with using our operands. Those are basically tables. So just I have already discussed with you that the select operator. This is basically symbol sigma. It is unary, and project that we studied projection, that's also unary, in which we have to get the columns and the rename. And these operators are basically are used for a single relation. So these are called unary operator. They only need one relation to be operated. So for the binary relation, you have join and division. And further, when you have to do union, difference, and intersection and Cartesian product, again that these are not, they are basically used on more than two relations. So those are not unary. So this is important for you that we have a select operator, and hoping nowadays you're doing something on SQL in the workshop in your labs. Have you studied select statement in your lab? Hello? Yes, sir. Yes, within the select, what you have to do? You have say select star from any relation name. What does it give? तो कॉलम नेम करते हैं सर, फिर बाद में एट्रीब्यूट करते हैं उसका नाम. So what should be the result at the end? Then you have to get the rows. Those are being filtered by the condition. So with the selection, and this is the factorial form, it reflects you that you will get as a result the rows, those meet the condition. So furthermore, no duplicates in result. The duplicate rows are basically not there in your final result. But this is assumed in our relation algebra. And if you would like to use that help using the SQL statements,
then you have to use the word distinct with that. If we use the word distinct, select distinct, you say in the command of the SQL, then you will get no duplications. However, this duplication, this elimination of the duplication is assumed within the selection operation. When we do this selection operation, we will get no duplicate rows. Okay. Furthermore, the schema result identical to the schema of the input relation. If a table A, it has 3 attributes, then the resultant table after query, that we say the select statement, we also get a relation with 3 attributes. So the schema of the input relation and schema of the output relation should be the same. Okay. And these conditions that we may use for selection operators, those may be complex, those may be simple. And you are familiar with a number of operators that you have used in your languages like C++ or Java and so and so. You say that this is relational operators like greater than, less equal, greater equal. You have worked on that. And you have also some conditions that you have to combine with the help of and or not. Those are also available in our selection operation. Let's get an example. This is the syntax how we have to write theoretically. We say we have to write sigma, and then we have to give the condition and which relation is used, which table is used. So for example, if you have a table person, its schema is ID, name, address, and hobby. These 4 attributes are with this relation. So when we have a selection operation, it is written as sigma hobby equal stamps, and the relation is person. Person that is written, that may be in brackets, that may be without brackets. That is acceptable. So what you are saying? You are saying I need only rows to be displayed as a result in which hobby is stamps. बात समझ आई बेटे? Did you get my point? Hello? Hello? Yes, sir. इस बात की समझ आ रही बेटे? Yes, sir. ये जो बेटे ये सिंटेक्स लिखी हुई है, सिंटेक्स में देखेंगे you have to given this sigma, then you give here condition. I can write here hobby not equals to stamps. Yeah, I can write here ID greater than 1123. You can give any condition. I can write here hobby equal to stamps and ID of this person greater than 1123. This may be a condition here, and this is the relation. So when this theoretical operation that you are seeing here, when this operation is carried out, then we have to get 2 rows, and each row have the hobby stamps in which the value of the attribute hobby is stamps. You are saying hobby equals stamps. You will get only those rows in which hobby is stamps. One more thing that you have to consider here, that this is the resultant table. Yeah, and this was the original table. You can say this is original relation, and this is our relation that we got after operation. And you have seen the schema of this table is also equal to the schema of this table, is it? It has 4 attributes. It has 4 attributes. So this is Yes, also the same. table. Yes, please. Hello. जी बेटे. हेलो. क्या क्वेश्चन था बेटे, पूछे. हेलो. आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो. हेलो. Okay, so within these select operator, you say when we have
operate on these rows, and you will get your resultant table, and the schema of the input table and the schema of out table is the same. Okay, so these are other operators you can use, that this relational operators: less, less, equal, greater, equal, not equal, so and so. And these are the examples of that. Within that condition, you have to write the attribute, then give the operator here, and then you may give the attribute or the constants. You can say that id is greater than this constant 100, let's suppose. So this is the whole, and you can combine the condition with the help of and, or not. Are you getting? Hello? हेलो, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही भी. हेलो इब्रार, you're not raising any questions even. हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हेलो, हेलो, are you facing any difficulty? Let me know. हेलो, सर कट रही है बार बार. बेटे मैंने ये पूछा, जो ये डिस्कस किया मैंने आपको, ये समझ आ गया सिलेक्शन ऑपरेटर की? हेलो सर ये हॉबी और स्टैम्पर समझा दें. जी जी, वो आपको समझा देते हैं. ये देखिए बेटे, जो इसकी सिंटेक्स है उसमें लिखा हुआ है यू हैव टू राइट सिग्मा, फिर उसके बाद लिखा हुआ कंडीशन, और ये लिखा हुआ रिलेशन. आपने थ्योरेटिकली यहाँ पे कंडीशन लिख देनी है, जो कंडीशन आप मीट करवाना चाहते हैं, जिस कंडीशन के तहत आपके जो रोज हैं या रिकॉर्ड जिनको आप कहते हैं वो फिल्टर होने चाहिए, और यहाँ जिस रिलेशन को आप यूज कर रहे हैं उसका नाम दे देना है. और आप फर्दर मोर आपने ये पढ़ा है कि ये जो सिलेक्शन का ऑपरेटर है, ये हम सिंगल रिलेशन पे इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये यूज करते हैं इसे. तो हमें रिलेशन की जगह पे हम टेबल का नाम लिखेंगे. ये टेबल है ही, रिलेशन बेटे टेबल ही होते हैं. आप देखो ना, ये पर्सन है, इसको हम कहेंगे ये रिलेशन है, इसका नाम आपने पर्सन रखा हुआ है. तो ये बेसिक कंडीशन आपने यहाँ पे लगा दी ना, हॉबी इक्वल स्टेम्स, और ये आपने लिख दिया इसका रिलेशन का नाम. ब्रैकेटों के बगैर लिखते हैं, ये ब्रैकेटों में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बेटे लिख सकते थे, एक आप लिखते कि सिग्मा नेम इक्वल मैरी, तो फिर बेटे हमारे पास रिजल्ट क्या आता? कितनी रोज हमारे पास आती? कोई बच्चा बताएगा बेटे? आप देखो इस सारे टेबल में से सर मेरी हॉबी है नेम इज इक्वल टू मैरी, तो सिर्फ एक जो आपकी रो है ये 5556 वाली, ये इस क्राइटेरिया को मीट करती है जिसमें नेम मैरी है. सो वी विल गेट ए सिंगल रो एज ए रिजल्ट. भी समझ आई बेटे? हेलो हेलो. यस सर मेरी का रिजल्ट है. दूसरा बेटे Yes, sir. हम यहाँ पे एक लिखें, अपनी एग्जाम्पल लिखें, हम लिखें सिग्मा, और मैं उसमें लिखूं कि हॉबी इक्वल टू स्टेम्स हो, ठीक है बेटे, एंड नेम इज इक्वल टू मैरी. फिर मुझे बताया कोई रिजल्ट आएगा इधर? जब एंड कंडीशन होती है तो दोनों जो आपकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए ना. अब मैंने कहा कि नेम उसका, अपना हॉबी उसका क्या हो बेटे? स्टेम्स हो, और नेम उसका मैरी हो. अब इसमें से देखेंगे कि मैरी नाम तो है लेकिन उसकी हॉबी स्टेम्स नहीं है. लेकिन ये दो आपकी तीन ऐसी रोज हैं जिसमें हॉबी स्टेम्स है लेकिन नेम मैरी नहीं है. इसका मतलब आप यहाँ पे आउटपुट में कोई भी रो हासिल नहीं करेंगे. क्लियर हो गया बेटे? ये क्लियर है बेटे? हेलो, आपकी तरफ से क्वेश्चन कम आते हैं. यस सर. या तो आप समझ रहे हैं या Yes, फिर sir. अच्छा ठीक हो गया बेटे. ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंट ऑपरेटर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं. जैसे हमारा ये जो टेबल है
पहले वाला जिसको हम ऑपरेट कर रहे थे, इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं सिग्मा आईडी ग्रेटर देन 2222। तो इसमें क्या होगा कि मुझे वो रोज यहाँ पे अवेलेबल होंगी जिनमें आईडी की वैल्यू ये 2222 से ज्यादा होगी, तो वो हमें शायद ये 2 रो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप ले सकते हैं, वो कंडीशन जो है उनको एंड आर नॉट से आप, लेट्स सपोज यहाँ पे कंडीशन हम देते हैं कि दिस इज सिग्मा, वी से नो हॉबी और हॉबी नॉट इक्वल टू स्टेम्प्स, ऐसे लिख दें। तो फिर कौन सी रोज आपके पास आएंगी बेटे जिसमें हॉबी स्टेम्प्स नहीं है? तो वो कॉइन्स वाली आ जाएगी और हाइकिंग वाली आ जाएगी। क्लियर? सो सिलेक्शन जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन वाला ऑपरेटर है, दैट इज यूनिटरी ऑपरेटर है, और जब हम उसे टेबल पे यूज करते हैं तो हमें क्या देता है? आपके रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन देता है। So these are the examples given. I say ID greater than this or hobby is equal to hiking person. इसका मतलब क्या है? It will give you the rows जिसमें ID की वैल्यू 3000 से ज्यादा हो या हॉबी उसका हाइकिंग हो, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर मीट करता है तो देन वी गेट दैट रो। तो ये और की सूरत में ये होता है, एंड की सूरत में दैट द ID is greater than 3000 and ID is less than 3999, तो we will get the rows in which the value of ID is greater than this and value of ID is less than this। ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। If the 2 conditions are met तो वो रो हमें मिल जाएगी। Similarly, you are saying not hobby equal hiking. You need all those rows in which hobby of that records is not given as hiking. बाकी rows सारी आपको दे देगा। Hobby not equal to hiking. So this is generalized selection is a unary operation. नहीं इसकी समझ आई तो पूछ ले बेटे। Any question about that? Hello? हेलो, आपकी तरफ से कोई भी सवाल नहीं रेज किया आप लोगों ने? Now the next operator that we have to study, that is projection. So we have already studied the projection that we have to deal with the columns, and this is a factorial form. Just it is saying that you have number of columns that you will get according to the condition given, that what column should be appear and according to what condition, if you are also filtering the records. तो it is denoted by pi, और ये number of आपके columns हैं जो आपको चाहिए। तो this is the same, it is the duplication should be eliminated. अगर उसमें कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट हैं वो उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, बट द नंबर ऑफ कॉलम दैट यू विल राइट विद इन द सिंटैक्स, वही कॉलम उसमें सिर्फ अपीयर होंगे। तो अगर इफ यू आर लर्निंग सीक्वल, अगर उसमें आप चाहते हैं डुप्लीकेशन शुड बी अवॉइडेड, देन यू हैव टू यूज द वर्ड डिस्टिंक्ट, दैट यू विल स्टडी इट इन द सीक्वल स्टेटमेंट्स। So what projection do? Deletes attributes that are not in the projection list. मकसद उसका ये है कि जो आप projection list में जो attribute आप देंगे, those will be appear only, and the rest of they should not appear. So it also eliminate the duplicates like your selection operator. So schema of the result contains exactly the field in the projection list. जो आपकी आउटपुट है वो भी एक रिलेशन की सूरत में होगी, और उसका जो स्कीमा होगा, those are the only those attribute that you have defined with the project operator. Hello, are you getting my point? Hello, Hamza? Hello, hello, are you hearing me? No answer from your side. So let's see, this is the example. So produce a table containing subset of columns
ऑफ आर्गुमेंट टेबल, एक टेबल आर्गुमेंट है, उसमें से आप ये देखो, ये रिलेशन है जिसमें रिलेशन का नाम हम दे देंगे, एट्रीब्यूट लिस्ट दे देंगे which attributes are needed. For example, this we have written pi, name, hobby, and the relation is person. अब you have demanding only 2 attributes, those should appear in the table that we get as a result. So in the original table, we have base table, we have this schema, ID, name, address, and hobby. So just we have to get all the lines, all the rows, but just it is restricted that the column should be only 2 columns. Are you getting? So name and hobby. So you can combine that with also with the help of the selection operator. That is also applicable because you can use the both. Okay. Any question about this one? No, sir. Okay. Let's see. This is how the duplication is eliminated. We have this person as a relation, and we say pi, name, address, and person. And if we have 2 attributes that we likely to get, one is name and other is address. Okay. And with the name and address, you have seen in the original table the 2 rows, that is 1 1 2 3 John 1 2 3 main stems, and 1 1 2 3 John 1 2 3 main. Now you have to see name and address are duplicated here in the 2 rows. Am I right? So if we eliminate the duplicates, then it will write this one only once, because if I need name and address, it is sufficient to get once. Why I have to get it twice? Because it is the same thing. So this is elimination is assumed in your operators, those are relational algebra. However, if you likely to get that in using SQL, then we will use a reserved word distinct when we give that command, and we will learn in SQL statements. Any question about these 2 operators that we have studied, the selection and the projection? Hello, Azim, Hamza? यस सर मैं यहीं पर हूँ। कोई भी क्वेश्चन जो आपको 2 हमने ऑपरेटर पढ़े हैं, एक सिलेक्ट वाला पढ़ा है और एक प्रोजेक्ट वाला पढ़ा है, यस सर। इसमें कोई समझ sir. आई? बस आपने इसमें याद ये रखना है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए जो ऑपरेंड हमारे हैं वो रिलेशंस होने चाहिए, टेबल होने चाहिए। फिर दूसरा आपने याद ये रखना है इसमें कि ये जो दोनों अभी तक हमने ये 2 जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ये दोनों के दोनों यूनिटरी ऑपरेटर हैं। ये सिंगल आपका ऑपरेंड इनके लिए चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। फर्दर मोर आपने इसको ये याद रखना है कि जब भी हम सिलेक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी रोज को फिल्टर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और उसको जब उसकी नोटेशन है वो सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा के बाद जो कंडीशन है वो लिख देते हैं, और उसके बाद उस रिलेशन का नाम दे देते हैं जिस रिलेशन को आप यूज कर रहे हैं। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन का ये है कि हम ऐसे कॉलम्स लेना चाहते हैं जो हमारे लिए नीडेड है, अननीडेड को हम नहीं लेना चाहते। तो जस्ट वी हैव टू गिव द कॉलम्स विद दैट, और उसको हमने किससे डिनोट किया, पाई से। तो पाई के बाद आप जो नोटेशन उसकी है उसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे जो आपको नीडेड है, और फिर जिस रिलेशन से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो वो रिलेशन का नाम लिख देंगे। तो इन दोनों में आपने ये चीज देखी है कि दोनों में जो डुप्लीकेशन है दैट इज एलिमिनेटेड, और ये जो रिलेशनल अलजेब्रा में ये अज्यूम्ड है कि ये डुप्लीकेशन यहाँ से नहीं होगी। लेकिन अगर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सीक्वल स्टेटमेंट में, तो उसमें आपको एक वर्ड डिस्टिंक्ट है वो लिखना पड़ेगा उसमें। जब डिस्टिंक्ट लिखते हैं तो वो फिर इसके डुप्लीकेट को अवॉइड करता है। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दैट? ये दोनों क्लियर है? नो सर। यस सर। चलो अब फिर नेक्स्ट पे जो यूनियन है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब दिस इज द सेट ऑपरेशंस।
and union, set difference, intersection, Cartesian product. So result of combining two relations. This means जब हम relations पे काम करेंगे तो हम आप कहेंगे ये तो two relations से करता है, तो ये binary operators हैं आपके. तो all its elements must be tuples having same structure. ये जो उसने ये कहा है कि there should be a union compatibility when you are using union, set difference and let's suppose intersection, उसमें यूनियन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. व्हाट डज मीन द यूनियन कंपैटिबिलिटी? जस्ट आपने इसको ज़हन में ये रखना है, जिन भी ऑपरेंड जिनको हम रिलेशंस कहते हैं, जिन पे हम ये ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं, उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए. क्या मैंने बेटे कहा? उनकी डोमेन जो है कॉलम्स की, जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उनकी सेम होना चाहिए. उसकी एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा. सो जैसे एक आपका ए टेबल है, उसमें 3 आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी सी एट्रीब्यूट है, और एक और आपका टेबल है एक्स एक्स, उसमें वाई जेड जेड वाई 3 और कॉलम है. तो आपस में जो कॉलम की करस्पॉन्डेंस है, इनकी डोमेन सेम होनी चाहिए. नाम ना भी सेम हो तो कोई नहीं, लेकिन डोमेन उनकी सेम होनी चाहिए. तब हम उसको कहते हैं टू टेबल्स आर यूनियन कंपैटिबल. टू टेबल्स आर यूनियन कंपैटिबल व्हेन दे हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. पहली बात, उसमें भी 3 कॉलम थे, दूसरे में भी 3 ही कॉलम होने चाहिए. एंड जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है वो उसकी टाइप ऑफ डाटा सेम होनी चाहिए, वो सेम डोमेन से हो. ये इसके लिए कंडीशन है व्हेन यू आर यूजिंग सच ऑपरेटर्स. ये अगेन द टू रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल कब? स्कीमाज ऑफ टू रिलेशंस मैच. दोनों का स्कीमा जो है वो मैच आपस में करे. बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स विद इन द बोथ रिलेशन हैव द सेम डोमेन. अगर वो यूनियन कंपैटिबल नहीं है तो फिर वो दोनों रिलेशंस पे हम ये यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस वगैरह यूज नहीं कर सकते. अभी एग्जांपल में ये मोर आपको क्लियर हो जाएगा. So within the union with the set theory you have two sets A and B. तो आप उसकी यूनियन निकालना चाहें तो आप ये कह देते हैं कि A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल होने चाहिए A यूनियन B में. रिकॉल करें. इज इट क्लियर? ठीक कह रहा हूँ? आपने सेट थ्योरी में ये पढ़ा था कि अगर मैं A सेट मेरे पास है एंड देयर इज ए B सेट मेरे पास है, इसके अपने अपने एलिमेंट हैं, अगर मैं इसकी यूनियन करूंगा तो A यूनियन B में वो मेरे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में भी है और B में भी है. तो दिस इज इट्स फैक्टोरियल नोटेशन ये वाली. सो लेट्स सपोज वी हैव अ टेबल पर्सन. इसमें आपका जो स्कीमा है दिस SSN नेम, एड्रेस, हॉबी, एंड और है हमारे पास प्रोफेसर है जिसमें ID, नेम, ऑफिस एंड फोन है. आर नॉट यूनियन कंपैटिबल. भी क्यों यूनियन कंपैटिबल नहीं है? अगर इसमें ऐसा चीज है, लेट्स सपोज वो जो डोमेन है हमारी फोन नंबरों की, वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं सारी. हॉबी जो सारी डोमेन है ये और है, इनकी डोमेन ही और है हॉबीज की. फोन की डोमेन और है. ऑल दो ये 4 हर एक में एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आर एट्रीब्यूट्स इन द बोथ आर सेम. लेकिन उसमें जो करस्पॉन्डिंग आपके इसमें दोनों स्कीमा में जो आपके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं वो सेम डोमेन में से नहीं है, उनकी डाटा टाइप सेम नहीं है. लिहाजा हम कह रहे कि ये तो कंपैटिबल नहीं है. ओके बेटे? अगर सपोज करो हो सकता है हम ये कहें कि क्या ये नेम है ये वाला और ये जो नेम है ये कंपैटिबल है, हम कहेंगे हाँ ये सेम डोमेन से है, तो इनकी जो है ना वो यूनियन हो सकेगी. अगर मैं इतना उसका पार्ट लेता हूँ, ये मेरे जो टेबल है उसमें ये कॉलम है तो उस पॉसिबल है. तो ये डोमेन जो है ना उसको उसके साथ करस्पॉन्डिंग जो आपका है एट्रीब्यूट करस्पॉन्डिंग और दोनों की डोमेन जो है ना वो सेम होनी चाहिए. अभी वी हैव टू डू द एग्जांपल्स, फिर उससे मजीद यू विल गेट दैट. लेट्स सपोज यू हैव U is used for the union and we have student A, one table, and other table is student B. Here is Sajjad, city Karachi, and Nasir Lahore, Bashir Peshawar, and Fareed from Dina.
So here is Nazir from Multan, Wasim from Jhelum, and Fareed from Dina. So you have to see that here name and city. Name and city. इसमें कितने columns हैं? You have 2 columns. Okay? And इसमें कितने columns हैं? You have 2 columns. Further we say the domain of this name column and domain of this name column are same. And domain of city and domain of city is also same. So you can do the union. इसमें क्या होगा? ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, ये भी रिकॉर्ड आ जाएंगे. ओके ओके सर. अब इसमें अगर यहाँ पे नेम की बजाय एन लिखा होता और सिटी की बजाय सी लिखा होता, अगर एट्रीब्यूट का नाम बेटे यहाँ एन लिखा होता और यहाँ सी लिखा होता, लेकिन उनकी डोमेन सेम है, तो आप उसको कहेंगे ये यूनियन कंपैटिबल है. क्लियर है बेटे? यस सर. तो विद इन द इंटरसेक्शन आपने पढ़ा था सब आपके थ्योरीज में, जो आपकी सेट थ्योरी थी कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, व्हेन वी हैव 2 सेट्स और उसकी इंटरसेक्शन ले तो क्या होता है, जो उसमें कॉमन एलिमेंट है दैट शुड बी द रिजल्ट. ऐसे ही है? यस सर. हाँ, इसमें भी ऐसे ही है. इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिलेशंस R1 R2 कैन ओनली बी कंप्यूटेड इफ R1 R2 आर यूनियन कंपैटिबल. इसके लिए भी पहली कंडीशन यही है कि यूनियन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. यूनियन कंपैटिबिलिटी है क्या कि जिन रिलेशन की आप इंटरसेक्शन दे रहे हैं उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, जिसमें एक में उतने ही आपके दूसरे में होने चाहिए. फर्दर मोर द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स मस्ट हैव सेम डोमेन, दे हैव सेम डेटा टाइप, so then it is applicable. Okay, and what it gives you when we operate this intersection, it will give you those are the common, जो दोनों में common आपके elements होंगे, that should be the result. अब then you have to operate that. We have to see intersection is denoted by this. ये वाला जो है आपका ये अब ये reverse U लिखा हुआ जैसे ये symbol है. Result of the operation R intersection S is a relation that includes all the tuples that are in both R and S. जो common है वो उसमें दे देगा. Union में क्या था बेटे? It will gives all the rows, those are in both tables. इसमें क्या है? It will give you the result on the rows, those are common within the two relations. बात समझ आ गई बेटे? यस सर. लेकिन दोनों के लिए ये जरूरी है कि इनमें यूनियन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. Let we get an example. This is denoted by this one, A intersection B. ये जो एरिया दरमियान में बताया हुआ है ये इसका कॉमन एरिया है, that should be the result. अब हम देखते हैं कि we have a customer relation A, we have customer relation B. इसमें वही ये नेम है, ये सिटी है, ये कंपैटिबल है आपस में, डोमेन इसकी भी सेम है उसकी भी सेम है. वैसे कस्टमर है इंटरसेक्शन कस्टमर बी. अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी रो दोज आर कॉमन. तो इसमें दोनों कॉमन है. एंड लाहौर एंड हियर आल्सो नासिर एंड लाहौर, दिस इज कॉमन, वी हैव गेट इट. फिर ये लिखा हुआ फरीद दीना और इधर भी इज इट फरीद दीना दूसरे में ये वाला. इसका मतलब इसमें 2 रोज कॉमन है और दोनों रोज कॉमन है, दैट वुड बी द आउटपुट. यहां तक क्लियर है? जो आपकी आउटपुट आई दैट इज आल्सो ए रिलेशन. एंड जो आपने कहा था ये भी एक रिलेशन है, दूसरा इनपुट दिया आपने वो भी रिलेशन है. तो ये हमारा पहली बात ये है कि व्हेन वी हैव टू यूज दीज ऑपरेटर्स एंड आवर ऑपरेंड्स आर रिलेशन, देन आवर रिजल्टेंट जो आपका रिजल्ट आएगा वो दैट्स आल्सो ए टेबल. ये बात समझ आ गई बेटे? यस सर. सो इसमें कोई परेशानी तो नहीं? नो सर. नहीं सर. No, the last one is the difference between 2 relations. That is also union compatible होना चाहिए. And we already discussed with you that A minus B never be B minus A. And this symbol is the minus sign. So consisting of all the tuples appearing in the first relation but not in the second. अगर A minus B करेंगे तो A की सारी आप टपल लिखने के बाद और उसमें से टपल वो लिखेंगे which are not in the but not in the second, जो दूसरे में नहीं है. तो अगर B माइनस A हो तो B की लिखेंगे और वो लिखेंगे जो आपके A में नहीं है. So this is denoted by this A minus B and B minus A.
अब देखो ना, ये a माइनस बी में पहले आपने a की ली और जो b में नहीं अवेलेबल, ठीक है बेटे, और इसमें क्या लिया है आपने, जो b में ली और जो a में अवेलेबल नहीं है. Let we get some result from this one. So we have two relations. Let's suppose R minus S is a relation that includes all tuples that are in R but not in S. So this is R minus S. If I say S minus R, तो फिर आप क्या कहेंगे? Is a relation that includes all tuples in S but not in R. तो ये दोनों जो है ना, ये symmetric नहीं हो सकते. So this is the student 1, this is student 2, and we say we have to say student 1 minus 2, student 2. तो अब इसमें देखेंगे, आप कहेंगे जो रोज पहले वाली में है, पहले वाली में आप ये देखेंगे कौन कौन सी हैं. साजिद है, नासिर है, बशीर है, फरीद है, बट इसमें से हमने देखना है दो आर नॉट अवेलेबल इन द सेकंड. अब इसमें से देखें सज्जाद, कराची, ठीक है बेटे, फिर जी सर। ये नासिर और लाहौर, ये है इसमें, दूसरे वाले में नहीं है, लिहाजा उसने इसको लिख दिया. साजिद वाली भी नहीं है, वो भी लिख दिया. बशीर वाली भी इसमें नहीं है, वो भी लिख दी. फरीद वाली इसमें है, लिहाजा उसको उसने कह दिया कि मैं इसको नहीं लिखूंगा. ये समझ आ रही बेटे? यस सर। तो ये है आपका स्टूडेंट 1 माइनस स्टूडेंट 2. लेकिन अगर आप लिखें स्टूडेंट 2 माइनस स्टूडेंट 1, तो ये जवाब नहीं आएगा. तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों रिलेशन a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस c. समझ आ रही बेटे? यस सर। अदर इसकी है, दीज आर द स्टूडेंट रिलेशन है, ये इंस्ट्रक्टर है, और इसकी हमने ये ए यूनियन बी निकाला हुआ है, ये वाला. फिर हमने ये निकाला हुआ है सी वाला के स्टूडेंट की इंस्ट्रक्शन जो है वो. फिर ये निकाला हुआ है कि जो स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट, ये वाले जो है. तो यू हैव टू गो थ्रू इट एंड प्रैक्टिस इट. सो दीज आर द ऑपरेटर दैट वी हैव टू स्टडी, एंड सम कॉमन जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ. ये ग्रेजुएट और ये मैनेजर्स हैं, और ये इनकी यूनियन है, और ये इंटरसेक्शन है इसका, ये वाला, और ये डिफरेंस है. सो यू हैव टू गो थ्रू एग्जांपल्स एंड इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ऑपरेटर्स यू नो अबाउट दैट. सो ओके सर। द लास्ट स्लाइड बेटे इसमें ये है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. नोटिस दैट बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर क्यूमुलेटिव ऑपरेशंस. इसमें क्या है कि आप आर यूनियन एस करें या एस यूनियन आर करें, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा. इसी तरह आर इंटरसेक्शन एस करें या आप एस इंटरसेक्शन आर करें, दोनों में एक ही रिजल्ट आएगा. जबकि ये रिजल्ट जो है ना, ये आपके ये जो आपका डिफरेंस था उसमें नहीं है. इट इज रिटन आर माइनस एस नॉट इक्वल टू एस माइनस आर. ठीक है बेटे? दूसरा ये एसोसिएटिव है कि आप लिखें कि आर यूनियन ये एस यूनियन टी इज इक्वल टू आर यूनियन एस एंड यूनियन टी. ये भी आपने सेट थ्योरी में पढ़ी हुई चीजें ये. तो दीज आर एप्लीकेबल ऑन दैट. ये इसकी, तो इससे मुतल्लक अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे बेटे करें. जस्ट जो अपने ऑपरेटर्स आज पढ़े उसमें हमने कुछ यूनिट ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जिसमें रीनेम पढ़ा, हमने प्रोजेक्ट पढ़ा है, हमने सिलेक्ट पढ़ा है. जो सिलेक्ट है दैट इज डीलिंग विद द रोज, एंड जो प्रोजेक्ट है डीलिंग विद द कॉलम्स. उसके साथ हम अपनी कंडीशन देते हैं चीज़ों को. और देन वी हैव टू से रीनेम. जब हम किसी भी एक रिलेशन में वी हैव टू रीनेम आवर एट्रीब्यूट, तो उसके लिए वो यूज होता है. उसके लिए आपको सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है. सिमिलरली यू हैव स्टडी सम सेट ऑपरेशन, जिसमें यूनियन हमने पढ़ा है, इंटरसेक्शन हमने पढ़ा है, डिफरेंस हमने पढ़ा है. सो विद इन दैट आपने देखा है कि इनमें यूनियन कंपैटिबिलिटी जरूर होनी चाहिए. यूनियन कंपैटिबिलिटी है क्या कि द बोथ रिलेशन टेकिंग पार्ट इन यूनियन दे हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. फर्दरमोर द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स मस्ट हैव सेम डेटा टाइप. तो ये उनमें जरूरी है. तो अगर इसमें अगर आप समझते हैं तो दी शुड बी बेसिकली इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ द सीक्वल स्टेटमेंट्स. अभी अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट हो गया है, देन वी कैन मैनिपुलेट इट प्रॉपर्ली एंड यू विल अंडरस्टैंड द सीक्वल स्टेटमेंट इजीली. कोई क्वेश्चन बेटे जो आपके ज़हन में आता है वो जरूर पूछें. और सर कोई क्वेश्चन नहीं है. I have recorded another lecture for you that is on relational algebra 2, जिसमें जो रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स हैं
जो हमारे रह गए हैं, जिसमें आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आपकी डिवीजन है, आपके जॉइन ऑपरेशंस हैं, वी विल स्टडी दोस। और ऐसा है कि जो आपका नेक्स्ट कमिंग सेशन होगा उसमें आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा इसी से रिलेटेड, और जो नेक्स्ट कमिंग आपका सेशन होगा उसमें इसी लेक्चर का आपका क्विज भी होगा जो आज मैंने दिया है। ओके सर। ठीक है बेटे, और फर्दर वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। तो कोई भी अगर सर इसमें, जी बेटे। सर इसमें जो आपने हमें लैब का में देना प्रोजेक्ट देना, इसका प्रोजेक्ट देना है ये डेटाबेस का, सर हम अपनी मर्जी से डिसाइड करके नहीं दे सकते? नहीं बेटे, हमने उसे ऐसे किया कि मैंने जो आपको बच्चा लैब कराता है उसको मैंने तकरीबन कोई 15 के करीब मैंने प्रोजेक्ट, बड़े स्मॉल प्रोजेक्ट लिख कर दिए हैं जो बड़े इजी हैं, और जस्ट आपने उनके लिए डेटाबेस डिजाइन करना है। और फर्दर मोर आपने जो प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, ऑल प्रोसेस शुड बी इंक्लूडेड, कि वो असल में आप उस कंपनी के लिए व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग द डेटाबेस, उन्हें क्यों जरूरत पेश आई, प्रॉब्लम्स उनकी क्या थी, ये आपने उसमें जरूर लिखना है, जो फिर वो आप उनकी रिक्वायरमेंट जो देंगे वो पता चल जाएगा। तो जो इस पे आपने बहुत कंसंट्रेट करना है बेटे वो आपका डिजाइनिंग का पार्ट है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट मॉडलिंग, जैसे ईआर मॉडलिंग जिसको हम कहते हैं, डेटा मॉडलिंग। उसमें आपने एंटिटीज को देखना है कौन कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, आपस में रिलेशन क्या है, उनको ड्रा करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो। फिर जितनी भी एंटिटीज बेटे आप उसमें डील करते हैं उन सब के टेबल बनते हैं। तो फिर हमने देखना है कि अगर इनके टेबल बनेंगे उनके एट्रीब्यूट क्या होंगे और उसमें अननॉर्मलाइज फॉर्म होगी हमारी, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मलाइजेशन, ताकि हमारी डेटा रिडंडेंसी जो है ना वो रिमूव हो जाए, हमारी एनॉमलीज ना रहे। ये जरूर आपने डिजाइनिंग में करना है। करने के बाद ठीक है सर। फिर हम कहेंगे कि जब हमने इसको, वो जो हमारा मॉडलिंग है जो हमने अपनी पढ़ ली रिलेशनल, उसके मॉडलिंग के हिसाब से डिजाइनिंग भी पढ़ ली, फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी डेटाबेसेस में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर हमने यूज करने हैं। तो फिर इसके बाद हम इसको, आपके सीक्वल स्टेटमेंट आप आजकल थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं, वो मैं भी आपको पढ़ानी है नेक्स्ट कमिंग, तो उसमें वो आप यूज करेंगे और बताएंगे कि ये क्वेरी मैंने लगाई थी, ये मेरा रिजल्ट आया, ये क्वेरी लगाई थी, ये मेरा रिजल्ट आया। वो जो क्वेरीज आप बेटे उसमें बिल्ड करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर होगा, कि यूजर किस तरह की रिपोर्ट आप चाहता था और उस तरह की रिपोर्ट की आपने उन्हें क्वेरी बना के दे दी। सर आप एक हमें सर एक हमें देंगे रिपोर्ट फाइल हमें कि इसमें ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? जी बेटे, मैंने ना वो जो आपको वो बच्चा जो है वो शेयर करेगा, उसमें मैंने ये सारी डिटेल लिखी है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें पहले आप ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम उस कंपनी के लिए आप क्यों करना चाहते हैं, उसको क्या बेनिफिट होगा, उस कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे। जस्ट मैंने तो थोड़ा थोड़ा उसमें जो दिया है वो आपको क्लू दिए हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू एनी इंडस्ट्री एट दिस मोमेंट, आपने लेकिन वी हैव टू बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ डेटाबेसेस ताकि आपकी उसमें प्रैक्टिस हो बेटे। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें ये होगा कि एटलीस्ट आप सीक्वल स्टेटमेंट को यूज करना सीख लेंगे, आप ये ईयर मॉडलिंग सीख लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नॉर्मलाइजेशन भी है जो हमने की है। तो अगर आपको ये चीजें करना आ जाती हैं तो देन यू विल बी गुड टू, एंड यू हैव लर्नड ए गुड सब्जेक्ट जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपनी रियल लाइफ में। और इट इज बिग एप्लीकेशंस इन एवरीवेयर ऑफ द डेटाबेसेस। कोई भी आप आजकल ले लें, आप बैक एंड पे डेटाबेसेस हैं, देखो उस क्वेरी पर्पस के लिए यू मे यूज द थिंग्स। ओके सर। एनी डेटाबेस से जो अभी हमने किया है, सो आई हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।